Yes, students. Do I need to repeat all these points, or I should continue further where I had left from the part, or I should give the just open heading parts, and then I should move on for this particular ones, those which we have done. सब briefly explain कर दीजिए. Briefly explain कर दो. चलिए ठीक है. I'll just give you the information in the brief part that what we have done in the last. So trademarking is about कि step 1 है. पहले हम trademarking में search out करेंगे कि इस नाम से पहले कोई brand बना तो नहीं हुआ, या उसको क्या चीज़ है और create हो रखी है तो किस चीज़ में deal out कर रही है. Then we can create the trademark application. हम application submit करेंगे trademark के लिए. हमने check out कर लिया that ऐसा कुछ नहीं है. Then we'll submit out our application कि हाँ हम इस symbol से इस चीज़ से बनाना चाहते हैं. So there is a time period from 18 to 24. फिर उसके लिए registration होते हैं, and costing is being given that 4,500 for the individual startups and the small enterprises, and trademark attorney professional fees is 3,500. So these kind of a fees we have to pay to register our brand name. So all things has to be done for this particular purpose कि जिससे हम अपना trademark brand name बना सकें. Next step is organizing your accounting and taxation system. अब हमें खुद का taxation system and all सारी चीज़ बनानी पड़ेगी जिससे related हम सारी चीज़ काम कर पाए, so that कि हम अपनी accounts अपने settle out कर सकें. So हमें क्या करना होगा, separate your business from the personal finances. जो भी हमारे personal finances हैं अपने बिजनेस को उनसे अलग करना पड़ेगा. बिजनेस में जो पैसा आएगा वही पैसा बिजनेस से खर्च होगा, rather than from the pocket we'll apply it out. Initially तो हम सारे पॉकेट से लगाते हैं, बट आफ्टर इन्वेस्टमेंट वी हैव टू गेट द अर्निंग फ्रॉम द बिजनेस एंड गेट द इन्वेस्टमेंट. जो भी हमें प्रोडक्ट्स लाने हैं या जो भी हमें सर्विसेज यूज करनी है वो हमने बिजनेस से ही पैसा निकालना है और बिजनेस में ही लगाना है. सो पर्सनल फाइनेंसेस उसमें ऐड ऑन नहीं करने हैं. नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन. ट्रैक ऑल ट्रांजेक्शन की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी में आ रही हैं जा रही हैं, वी हैव टू कीप ऑल द ट्रैक ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस. किस कस्टमर ने कितना पे कर दिया, कितना उसके पास बकाया अभी बैलेंस है. So all those things we have to track out the things. Next is use of small business accounting software. अब हम कुछ application software आज की डेट में तो बहुत सारे freely available है. Even somewhere the tally is also available, जो आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं. जितने भी small businesses हैं वो tally यूज़ करते हैं because freely versions, or you can say the copied versions are also available which are used. That is wrong to use the copied version. We have to pay it and then we should use it. But still people use out the copy part and they just continue with that. And unfortunately they don't have any kind of a backups, so हम copied use करते हैं. So that's why we have to use the original one. So in this case we have to use a small any kind of a software to record all the transaction की कितने का प्रोडक्ट्स हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, उसमें एंट्री होगी, उसकी कॉस्टिंग आएगी, पर पीस की कॉस्टिंग आएगी. देन सपोज किसी ने 10 पीस लिए तो उसका मल्टीप्लिकेशन होकर वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड हो जाएंगे. टोटल बिलिंग भी वहीं से निकलेगी, टोटल अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स की हमारे कितनी अकाउंटेबिलिटी रहती है, कितने कितने प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में जा रहे हैं. सो ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड विद द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट थिंग, हायरिंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट. प्रोफेशनल अकाउंटेंट हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है कि हमारे जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है बहुत जगह पे, वो हमारी वो रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है. ही कैन ईजिली मैनेज आउट आवर अकाउंट्स की किस तरह से हमारा जितनी भी ट्रांजेक्शन उनका रिकॉर्ड इजीली रख सकता है. कहाँ पे हमारी चीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमारी चीज़ को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है. सो ऑल दोज थिंग्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विल गाइड, और इवन जीएसटी फाइलिंग एंड ऑल टैक्स डिडक्शंस एंड ऑल सारी जगह वो हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग योर पेपर वर्क एंड डिजिटाइज. कि जितना भी हमें पेपर वर्क हमारे हैं, जितने भी बिलिंग्स है या जो भी है, वो हमें सब कुछ ऑर्गेनाइज मैनर में रखना चाहिए. एंड स्पेसिफिकली नाउ डेज इट हैज़ टू बी डिजिटाइज. हमें उसका सारा डिजिटल फॉर्मेट में रखना चाहिए बिकॉज पेपर वर्क माइट बी वी कैन लेफ्ट आउट समवेयर. बट आज के टाइम में जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम आज अपनी इंश्योरेंस अपना पॉल्यूशन ऑनलाइन रखते हैं. वी हैव द डिजिटल लॉकर जिसमें हमारी आरसी भी ऑनलाइन होती है. So that's a preference which is being given because वो चीज़ आपके साथ ही रहेगी, at least at your back end, but papers you can't carry it at everywhere. So that is how organizing, हमें अगर हम paper works या हम कुछ registers maintain भी करें, so we have to be in very organized manner and we have to digitize all those things which are being important. Next thing, adopt a system for accounts receivable. अब accounts receivable की
सपोज हमारे 50 कस्टमर है, सबसे हमने पैसा लेना, अब किस कस्टमर ने कितना पैसा दे दिया है, कितना नहीं दिया है, और कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है, किसके अकॉर्डिंगली हमें उन्हें माल भेजना है. सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू अडॉप्ट सच काइंड ऑफ अ सिस्टम कि जिससे हमारा अकाउंट जो से किससे कितने कितने पैसे आ गए हैं, आने हैं, वी शुड मेंटेन ऑल दोज अकाउंट्स पार्ट. नेक्स्ट इज रिव्यू योर बुक्स ऑफन. यानी कि जो भी आपने अकाउंट्स की बुक्स बना रखी हैं, जो भी आपने बकाया खाता बना रखा है, या जो भी आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स मंथली सेल हो रही है, कितना में रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं, मंथली कितना रॉ मटेरियल आ रहा है. सो ऑल दोज हमें हमें रिव्यू रेगुलरली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, मंथली करना चाहिए, सो दैट कि जहाँ जहाँ पे when we'll review it out, we'll understand कि हमारे बिजनेस में कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ पे कम खर्चा हो रहा है. ऑल द बिल्स वी हैव टू रिव्यू कि क्या चीज़ इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा हो रही है बिजनेस की, कहाँ पे हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कितनी सैलरीज हम दे रहे हैं, मार्केट में कितनी सैलरी चल रही है. तो ऑल दोज हमें टाइम पे हमें रिव्यू करना चाहिए, सो दैट कि हमें लास्ट मिनट में जाकर कोई हबदड़ ना हो किसी चीज़ को लेकर के. टाइमिंगली हम इन चीज़ों को लेकर चलते रहेंगे, सो विल बी अपडेट इन आवर नॉलेज कि हमें सारी चीज़ पता रहेगी. Okay, so this was about the organizing your accounting and taxation system. Next is creating business policies. अब पॉलिसीज भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगी, कुछ एम्प्लॉयज भी हायर होंगे, या बिजनेस हमारा किस चीज़ में डील करेगा, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करना है, किस मतलब किस क्वालिटी से डिग्रेड नहीं होना, किस क्वालिटी तक हम जा सकते हैं. ऑल दोज पॉलिसीज वी हैव टू क्रिएट अप इन दैट वे. So how to develop and implement new company policies हमें किस तरह से करनी चाहिए. Firstly, we need to identify the need of the policy कि किस तरह की नीड है हमारी कंपनी की, किस तरह की पॉलिसी हमें उसके लिए लानी चाहिए. For that particular purpose, we have to find out. Next is determine the policy content. क्या पॉलिसी है ये हमने डिटेल में कर लिया था, और we have to do it. Please just give me a reminder. Have we did it in details, और इसमें हमें जस्ट थोड़ा सा स्टार्टअप ही किया था एंड देन वी लेफ्ट इट अप. एनीवन प्लीज. सर डिटेल में नहीं किया था ये नहीं किया था. ओके, डिटेल्स में नहीं किया ये। था. Okay, so let's have it in the details part. That how the company to develop and implement the company policy. अब एक नई कंपनी बनी है, अब उसे अपनी कुछ पॉलिसीज क्रिएट करनी है, एंड दैट हैज टू बी एज पर द इंडस्ट्री पार्ट की किस तरह से हम उस चीज को रन करना चाहते हैं. एंड सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस just a second. Well, the Twitter is getting open up. Okay. So they are the HR professionals who are often confronted with the employees related issues in the workplace, faced by the deciding and the best approach in handling the issues. यानी कि HR professionals हम हमेशा हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में HR professionals हायर करते हैं related to the employees related issues in the organization faced by the various employees, and those are going to be get discussed up with the HR professionals. So company policies are created to establish expectations and to provide expectations and provide guidance how consistently to handle out our workplace in a different situations. So almost all companies have some kind of a policies which are not all encompassing, and they provide directions regarding what is appropriate and as well as inappropriate or unacceptable behaviors. यानी कि उस पॉलिसीज में हम क्या डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ हमारी कंपनी के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, और क्या ऐसी चीज़ें जो अनअप्रोप्रिएट है, जो अनअक्सेप्टेबल है कंपनी के पास. Company policies helps to maintain order within the organization and ensure that people are treated fairly and equally. जो policies बनाई जाती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं कि एक
लेवल, एक स्टेबिलिटी और यू कैन से एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना दिया जाता है. दैट पॉलिसीज आर द स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, दैट अप टू दिस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन यू आर बीइंग ट्रीटेड अप, कि जो भी आएगा वो इसी के अकॉर्डिंगली ही ट्रीट होगा. कोई ऊपर नहीं होगा, कोई नीचे नहीं होगा. नोबडी विल बी प्रेफर्ड आउट इन एनी काइंड ऑफ अ वे. All will be treated equally as per these particular policy standards. So policies also help employees to understand what is expected from them. कि पॉलिसी उन्हें गाइडेंस दे देती हैं कि उनसे क्या, किस चीज की और किस बिहेवियर की रिक्वायरमेंट वो एक्सपेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन. उसके अकॉर्डिंगली द एम्प्लॉय इज एबल टू गेट मैनेज आउट द सिचुएशंस or to get enrolled in those particular environment. So the 5 steps needed to develop and implement the new employer policy is to be outlined before. So that identify the need of the policy. सबसे पहले हमें क्या करना है कि पॉलिसी किस तरह की हमें बनानी चाहिए, हमें उस तरह की नीड डिफाइन आउट करनी है. दैट हाउ वी नीड टू डिफाइन आउट द पॉलिसी, कि क्या चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, क्या चीज हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, हम उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज को डेवलप करें. सो एम्प्लॉयर्स do not need to create policies for every unforeseen event, कि हर you can say the every situations या every particular criteria के लिए हमें policies बनाने की जरूरत नहीं है. Event as this will limit the management ability. उससे क्या होगा कि management की ability पे वो limitations लगा देगा, which has the ability to address the individual employees to needs and unique situations. बहुत सारी situations ऐसी हो सकती हैं, unique हो सकती हैं. जितनी ज्यादा बड़ी पॉलिसीज हर सिचुएशन को लेकर के बना देंगे, उतना एम्प्लॉय जो सा वो अपने आप को फंसा हुआ, अपने आप को बाउंडेशन में फील करेगा. We have to make the policies in the broader area so that he can understand कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, and on that basis the different situations will come up. On that basis the judgment will be given by the management, because कुछ decision management के ऊपर हमें छोड़ने पड़ेंगे. सपोज एक आदमी बहुत अच्छा काम करके देता, बट इन डिफरेंट सिचुएशन ही इज डूइंग आउट सम काइंड ऑफ अ रॉन्ग वर्क, तो मैनेजमेंट को अब उस टाइम पे पावर हाथ में होनी चाहिए कि वो किस तरह से डिसीजन ले. अदरवाइज अगर हमारी पॉलिसीज उस मोमेंट पे क्रिएटेड अप होंगी, सो देन ही दैट एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी मैनेज आउट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉलिसी बेसिस, और वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो, और हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा भी हो. तो दैट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. So policies should be provide good guidelines and expectations to ensure fair and consistent practices. यानी कि policies जो चाहिए एक good guidelines, एक अच्छी guidelines provide करे that you have to follow out these things, these rules, and understand it what is expected from them. यानी कि employee से क्या expect किया जाता है, वो चीज वो guidance provide कर सके. So this is how the policies should provide good guidelines and expectations to ensure fair and the consistent practices and the legal compliance. Okay, employers may want to develop a policy. Employers कुछ तरीके की policies develop कर सकते हैं that if employees' behavior indicates confusion without the appropriate conduct or how to handle the certain situations, किस तरह की situations को manage out नहीं कर पा रहे हैं. For example, attendance policy, cell phones use policy, travel expense policy. तो किसी तरह की policies इन चीजों को लेकर के बनाई जा सकती है. That is the kind of behavior. Next is if legal protection of the organization is necessary, यानी कि investigation policy. कुछ अगर कंपनी में गलत हो रहा है, harassments हो रही हैं, या किसी तरीके से कुछ गलत चीजें, act of you can say on not a good behavior, or uh, you can say the bad habits are going on. People are not working, joining the industry, punch करके अंदर आ जाते हैं but काम नहीं कर रहे हैं. तो legal protections of the organizations are also necessary for that particular purpose. Next is if there is a need of a government laws and regulation compliance. अब government के laws भी हमें apply करने होते हैं, regulations apply करने, that is family and the medical leaves. So this kind of a things we have to adjust for that particular purpose कि हमें medical leaves भी देनी होती है जो government की तरफ से हमारे पास necessary हैं, criteria जो हमें देनी ही होती है. Next is if there is a need to create consistent standard and the rules, progressive discipline की किस basis पे उन्हें प्रमोशंस मिलते चले जाएंगे, क्या कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स होंगे उनके, इतनी ईयर्स की सर्विस के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा. सो ऑल दोस इस तरह से हमें वो भी बनाने पड़ते हैं.
Next is there need to create consistency and fair treatment for the employees, कि हमें कंसिस्टेंसी जो सी क्रिएट करनी है एम्प्लॉयज़ के अंदर, उनके साथ इक्वली ट्रीट आउट किया जाए। तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, बेनिफिट एलिजिबिलिटी की किस तरफ से किसको बेनिफिट मिलेगा, कौन ओवर टाइम एक्स्ट्रा करके अच्छा काम प्रोड्यूस करके अच्छा वर्क करके दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स मिलेंगे। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक पर्टिकुलर सैलरी डे हमारा फिक्स हो जाएगा, इससे लेट नहीं होगी। इस टाइम पे टाइम यानी कि किस लेवल के एम्प्लॉयर को कितनी पेमेंट्स होंगी, उससे ऊपर नहीं होगी। सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू क्रिएट इन दैट पर्टिकुलर। नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द पॉलिसी कंटेंट। अब पॉलिसी का कंटेंट भी हमें डिफाइन आउट करना पड़ेगा। दैट पॉलिसीज आर रिटन guidelines that explain generally what the employer requirements are and how the employers will be treated। यानी कि पॉलिसीज की रिटन गाइडलाइंस हम रेडी करेंगे जनरली कि एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो सा एम्प्लॉय होगा वो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीट आउट होगा। So as the organization create new policies, they should be careful to avoid language that conveys the rigid rules। यानी कि हमें लैंग्वेज इस तरह से रखनी चाहिए कि वो rigid rules ना उस पर लगे, कि ऐसी फिर पर्सन क्या करेगा, फाउंडेशन में फील करेगा उन पॉलिसीज को पढ़ के, एंड ही इज नॉट गोइंग टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसे इतनी लिमिटेशंस दिखा दी जाए कि वो सोचे कि मैं यहाँ अगर ज्वाइन करता हूँ तो मैं तो फंस जाऊंगा हर तरफ से। आई एम नॉट एबल टू डू आउट द थिंग्स, आई एम नॉट एबल टू गेट रिलैक्स, आई एम नॉट एबल टू यूज आउट द सेल फोन। अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो वर्किंग टाइम के अंदर सेल फोन रिस्ट्रिक्शंस आप लंच टाइम में यूज करिए। इफ यू हैव सम काइंड ऑफ अर्जेंट कॉल यू आर एबल टू पिक। सो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिख दिया कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल फोन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं है गेट पे आते साथ फोन जमा करा दिया और जाते टाइम में मिलेगा। नो, दिस काइंड ऑफ कंडीशन नॉट हैव टू बी। कोई रिजिड चीजें नहीं होनी चाहिए। Okay, so that conveys the rigid rules that must be followed exactly as written all by the all circumstances। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Flexibility should be built into the wordings and promises that could be interpreted as the contract should be eliminated। यानी कि flexibility होनी चाहिए, promise होने चाहिए कि इन चीज़ों को भी interpret किया जा सकता है when the situations are different and we can eliminate all those rules। So next, for example, is organization should not state the organization only and always do something or will and must। यानी कि इन वर्ड्स हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एम्प्लॉयज एज परमानेंट। ये एम्प्लॉयज को हमें एज परमानेंट भी डिफाइन नहीं करना चाहिए। स्टेट द एम्प्लॉयज विल बी ट्रीटेड ओनली फॉर कॉज। यानी कि जो उनसे एम्प्लॉयज को हम टर्मिनेट करेंगे किसी कॉज के लिए टर्मिनेट करेंगे, यानी कि कुछ उसके पीछे रीजन ही होगा दैट व्हाई दे आर गोइंग टू बी टर्मिनेटेड। मेक पॉलिसी ऑफ द जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी पॉलिसीज बननी चाहिए। यूज ऑफ ऑल इंक्लूसिव लिस्ट which act as a which act such as a in disciplinary procedures or the work rules। यानी कि उन चीज़ों को भी हमें लिस्ट में इनरोल करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द डिटरमाइन द कंटेंट। तो अब कंटेंट के अंदर क्या होना चाहिए, पर्पस स्टेटमेंट होनी चाहिए। The purpose statement outlines why the organization is issuing the policy and what the desired effect and the outcome will be। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को पर्पस डिफाइन करना चाहिए जो वो कंटेंट रेडी आउट करें, जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं। दैट व्हाट इज द डिजायर्ड आउटकम फॉर दिस, कि इस चीज़ से हम एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं कि वो जो सा हम पॉलिसीज बनाएंगे इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो कस्टमर एम्प्लॉय के पास जाएगी और उसका आउटकम क्या होगा, दैट ही विल अंडरस्टैंड and he will govern all the policy rules and he will work out according to that। Okay, so that is the purpose of statement। Next is specification section। In this section includes details about the specific regulations, requirements or the organizational behavior standards that the policies create। यानी कि इन सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन आउट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स कर एम्प्लॉय से रिक्वायरमेंट्स डिफाइन आउट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर स्ट्रक्चर डिफाइन आउट कर रहे हैं कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उस स्टैंडर्ड्स को हम डिफाइन आउट कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दैट एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन बिजनेस अटायर Monday to Thursday। On Friday, employees are permitted to wear casual attire। So this is a kind of a requirement or the organizational behavior जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आउटकम क्या निकल रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे टू थर्सडे वो क्या करेगा, प्रॉपरली ड्रेसअप होकर आएगा एंड प्रॉपरली बिजनेस अटायर और यू कैन से द फॉर्मल अटायर्स विल बी देयर। बट ऑन द फ्राइडेज देयर इज अ slightly you can say concession out is there from the employer side that you can wear the casual dresses
on workplace, so you can bear out in that. Okay. So this is a kind of a specification section कि हमारी specifications क्या है, हम किस तरह से कुछ particular conditions के लिए कुछ specify करके दे रहे हैं. Next is implement section. अब implement section में क्या हो रहा है, that this section indicates which parties are responsible for carrying out the policy statement and how those parties will ensure that adherence of the policy or adherence to the policy. For example, manager will exercise discretion in determination appropriateness in appearance. यानी कि जो भी है इम्प्लीमेंटेशन है कि मैनेजर्स जो उनसे एक्सरसाइज करें डिस्क्रिशन इन डिटर्मिनेशंस डिफाइन आउट करें अप्रोप्रिएटनेस एंड इन द अपीयरेंस, यानी कि वो प्रॉपर्ली काम कर पा रहे हैं अपनी प्रॉपर्ली यू कैन से अपीयरेंस पे भी काम करें. मंडे टू थर्सडे दे आर वियरिंग इट आउट, they are working out properly manner, they are governing out all their duties. So implementation section, that all the things are working in an appropriate manner and all the person or the employees who are being hired up by the organization, they are working in an appropriate manner. So that's the implement section कि जो भी आपने पॉलिसीज बनाई है वो इम्प्लीमेंट वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू वो उसी तरीके से काम हो रहा है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव डेट. दिस डेट इंडिकेट्स व्हेन द पॉलिसी इज कंसीडर्ड इन फोर्स, यानी कि रूल लागू कब से हो रहे हैं, दैट इज द इफेक्टिव डेट. यानी कि अब जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं दैट फ्रॉम द 1st September द कॉलेज विल बी रेगुलर. So today is the 31st. So we are already prepared that from the tomorrow onwards we have to be regular to the college from Monday to Saturday, and we are being working out with that. So effective date is being given to us to all the employees कि इस दिन से ये policy लागू हो रही है. So that is to be work out with that particular way कि effective date हमें define कर दिया and that is going to work कि इस date से ये rule लागू हो जाएगा. Next is glossary. A listing of definition for the terms found in the term policy. For example, casual shirts, all shirts with collar, including colored blouses, golf and polo shirts. तो मतलब कि जितने भी definitions है, जो भी उनकी जो भी necessary चीजें ऊपर define करी गई हैं, उनमें क्या क्या considerable है और क्या क्या inappropriate है, वो सारी चीजें glossary में define करी जाती हैं. I hope up to this particular topic you all guys are clear. Yes, please respond, guys. Everyone. Yes, sir. Thank you, Deepthi. Some more students, are they listening to me? Are they having the knowledge जो आपको चीज provide करी जा रही है? Are you getting the things? Please provide me the feedback. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Yash. Anjali, are you there? Udit? Rachit? मृदुल? अब जो यस नहीं बोलना या जिसको अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं हुआ है, बोथ में से कोई भी रिप्लाईज आप कर सकते हैं, बट जो रिप्लाई नहीं दे रहा है अटेंडेंस माइनस करने लगा हूँ मैं. Okay, I'm taking out the name. Yes, sir. Adarsh? Yes, sir. Aman? Yes, sir. अंजलि? ओके, देखा पहला नाम मिल गया हमें. ओके, Yes, sir. Yes, sir. अंजलि माइनस हो गया. नेक्स्ट इज दीप्ति इज देयर. इशिका? ओके, जतन? करण अरोड़ा? नेक्स्ट इज नितिन. नितिन अरोड़ा? Yes, sir. वंशिता?
Yes, sir. तुषार बेस्ट, Yes, sir. गुड। रचित, चलिए कोई नहीं। आज के लिए हम मेरे पास 3 नाम काफी हैं, अंजलि बेस्ट, जतिन एंड करण अरोड़ा। सर मेरा तो लिया ही नहीं आपने। जरूरी थोड़ी है मैं सबका लूं। तू तो क्षितिज है, तू तो अभी आया, तेरी अटेंडेंस तो पहले ही नहीं लगी, अब क्या प्रेजेंट करूंगा मैं तुझे। सर थोड़ी देर पहले आया था, अभी थोड़ी। सही बात है सर। चलो, मूविंग ऑन टू द स्टेप 3, ऑब्टेन स्टैक होल्डर्स सपोर्ट। यानी कि अब थर्ड में क्या पॉलिसीज हैं हमारे पास कि हम स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट ले सके। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? एवरीवन, जस्ट लाइक आपके कॉलेज के स्टेक होल्डर्स कौन है? मैनेजमेंट है, फैकल्टी है एंड यूथ स्टूडेंट्स। तो सारे स्टेक होल्डर्स ही हैं, बिकॉज विदाउट दीज 3 पर्सन्स कॉलेज इज नॉट अ कॉलेज। स्टूडेंट्स मिसिंग हो जाएंगे तो फैकल्टी और मैनेजमेंट को कोई काम नहीं, मैनेजमेंट मिसिंग हो जाए तो फैकल्टी स्टूडेंट्स को काम नहीं, फैकल्टी मिसिंग हो जाए तो स्टूडेंट और मैनेजमेंट को कोई काम नहीं। So all three are the stakeholders in the project. So all too often, those who are expected to carry out the policies ensure adherence to the policies are not consulted prior to the implementation of the policy. यानी कि पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही लोगों के साथ ये पॉलिसी डिस्कस नहीं होनी चाहिए, because somebody will find out some positive points, somebody will find out some negative points. ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मैनेजमेंट को फेवर करेंगे उस पॉलिसी के अंदर। नो, एम्प्लॉयज भी फेवर हो रहे होंगे बहुत जगह पे एंड कई जगह पे मैनेजमेंट भी फेवर हो रही होगी। सो वंस द पॉलिसी हैज बीन ड्राफ्टेड, इट will be the important to communicate through the meetings, emails or the teleconference with the managers and the supervisors who will be expected to apply the policy। यानी कि इन सब के थ्रू वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा। This communication should include why the new policy or the revised policy is needed। यानी कि नई पॉलिसी आई है या कंपनी में पॉलिसी को रिवाइज किया गया है, इसकी क्या जरूरत थी। द एक्ट ऑफ पॉलिसी विल हैव द स्टेक होल्डर्स एरिया एंड द एड्रेस एनी पोटेंशियल थॉट्स और द कंसर्न द स्टेक होल्डर्स में हैव। यानी कि इस पॉलिसी के रिगार्डिंगली अगर किसी स्टेक होल्डर्स के पास कुछ भी ऐसी पोटेंशियल थॉट्स हैं या कुछ भी अच्छी लग रही हैं, गलत लग रही हैं, कुछ भी ऐसे कंसर्न हैं, दे मे कैन हैव विद देम। So considerations from these meetings will lead to any necessary revisions before the legal council conduct its final policy। यानी कि उन मैनेजर्स के साथ जब डिस्कस हो गई है, उनके पास जो पोटेंशियल थॉट्स हैं या कुछ कंसर्न्स हैं, वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस आउट होंगे एंड देन आफ्टर डिस्कसिंग द थिंग्स द फाइनल पॉलिसी विल बी लॉन्च्ड for all the employees according to the after the discussion amendments made in the policy। So for that, कि पहले वो हायर लेवल पे सिर्फ डिस्कस करेंगे उस पॉलिसी को, उसके प्रोज एंड कॉन्स फाइंड आउट करेंगे, उसके थॉट्स एंड कंसर्न्स चेकआउट करेंगे जो भी हायर लेवल पे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो अमेंडमेंट्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो किए जाएंगे, उनमें रिवीजन की जाएगी एंड आफ्टर दैट द फाइनल पॉलिसी विल बी लॉन्च्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स द रिवाइज्ड वन और वेदर इट्स द न्यू पॉलिसी। ओके, आई होप यू गाइस गॉट दैट। Next step is communicate with employees। Organization should give employees background information। यानी कि उसके पीछे की हिस्ट्री, यानी कि उस पीछे का रीजन हमें देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, so that they are able to get those things as to why this policy is being implemented। यानी कि हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, चेंजेस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन उन्हें बता देना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प to make them understand those things। Employees should be given enough details to make the organization positions clear while keeping the communication process short and simple। यानी कि communication जो वो short and simple होना चाहिए, but डिटेल सारी होनी चाहिए employees के पास। So that is the required। So employees can determine what is the best approach to introduce the policy। यानी कि employers को find out करना चाहिए कि best policy क्या है उस नई policy और रिवाइज policy को introduce करने का among the employees।
so that the employees can easily understand as taking up in a nature, sensitive and easy way to understand those policies. किस तरह से वो इस तरह को पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करें कि लोग इसे नेचुरल तरीके से लें और इजी टू अंडरस्टैंड उनके लिए हो कि वो इजीली ग्रैब कर पाए उस चीज को. The best means of distribution of the policies through the emails, memos, individual small groups or the all employees of the company. यानी कि मीटिंग करके वो चीज बताई जा सकती है या मेल्स करी जा सकती है. दैट आर नाउ डेज वी फॉलोड आउट कि एवरी पॉलिसी जो भी रूल्स आते हैं वो मेल्स पे आ जाते हैं एंड एवरीबॉडी फॉलोज दैट. सो दैट मस्ट बी डिटरमाइंड. If using email or the company memo, these communications should be distinguishable from other routine communication. यानी कि other routine communication से different होना चाहिए that employees में easily overlook. यानी कि उस पर concentrate करके एक बार उसको जरूर check करें. ऐसा ना हो कि वो regular mail की तरह आए. It should be have a good subject heading so that everybody should give a focus to that particular mail और उस पर focus से उसे read out करे and understand those. So for example, organization can specify the topic in the subject heading, change the importance of an email. यानी कि उस email को important show करना है तो उस तरह से उसकी subject heading भी उसी तरीके से ही हमें रखनी चाहिए. तो change the background, उसका background change कर सकते हैं. Front of the memo जो उनसे और email है उसको हम कुछ changes ला सकते हैं. Change in the delivery method of the मेमोज के जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो किसी तरीके से डिफरेंट वे यूज कर सकते हैं. जो जनरल वे होता है उसको छोड़ करके सम न्यू वेज अगर पर्सनली दे सकते हैं या रिसेप्शन से हैंड ओवर कर सकते हैं मेमोज rather than giving through the emails or on different ways. So adding the receipt of the emails कि हम उनसे receipt में acknowledgement मंगा सकते हैं कि that you have read or not, आप इसका acknowledgement भेजिए. So all those things we can have a different ways to communicate to the employees in a different way that we should be different from the regular routine. And the last is update and revise policy. यानी कि clear, well-written policies are to be regularly reviewed and can be effective employees relations tools and the communication devices. यानी कि regularly review होनी चाहिए policies, regularly update होनी चाहिए as per the organization demand or as per the seeing the employees behavior. So on that basis we have to be in a regular revision views for the policy. They illustrate the organization commitments टू अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट. यानी कि वो क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट को डिफाइन करते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बनता है. सो ऑल्दो रिटन पॉलिसीज इन जनरल आर नॉट लीगली रिटन, आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड. जनरली हमें लीगली रिक्वायर्ड नहीं है बट दे कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस. यानी कि हम किसी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव नहीं करते हैं. वी जस्ट ट्रीट ईच everything equally. So the update and revisions is being requirement up to date from all the time that time to time we have to review and time to time we have to update our policies. And written policies are in general are not legally required. Legally required नहीं है but they can be used to demonstrate the non-discriminatory employment practice. यानी कि हम किसी एम्प्लॉय के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, किसी गलत बेसिस पे हायरिंग नहीं कर रहे हैं, किसी गलत तरीके से हम उन लोगों को सर्व आउट नहीं कर रहे हैं. तो सर्व एज अ बेसिस है ना इफेक्टिव डिफरेंस इन द एम्प्लॉयमेंट लॉज. यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं इक्वली ट्रीट हो रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉ बना हुआ है उसी तरीके से हम सभी चीजों को लेकर के चल रहे हैं. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू यू गाइस. एंड today this much topic we are going to cover it out and rest we are going to do in the next lecture. I hope you are able to understand this. So today we had worked out on the how to develop and implement the company policy. Okay, so tomorrow we'll be having our next lecture, so we'll be continuing with that. And hope this lecture has made you understand how to develop out the policies, on what criteria we have to develop and what kind of things we have to be in understandable part. हमें किस चीज़ को लेकर के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए और किस तरह से हमें क्या क्या वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए और पॉलिसीज के अंदर क्या क्या पॉजिटिवनेस होनी चाहिए so that the employees should feel out comfortable in that. Okay, so thank you for सर अटेंडेंस लगा दो. बच्चे जो लेट ज्वाइन किए हैं वी आर बीइंग
informed that we should not give the attendance. हाँ सर लगा दो प्लीज लगा दो सर हम 9:25 पे आए थे सर, लगा दो। हमें मैं भी 9 सर हमें 9:15 तक का बोला गया है। Okay, this time I'll consider, but from next time onwards it should not take place. Okay. Okay, thank you sir. Okay. So थैंक यू Rupali and सर Pritesh will be there. Okay. So thank you for Thank you today's sir. lecture and have a nice day. Take care. Thank you sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you sir.